Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine, students. Yes, beta. Today we are going to start next half of chapter number 4, My Experiments with Truth, written by Mohandas Karamchand Gandhi. Yes, students, as you all know, beta, that Gandhiji was a man of truth. He was highly impressed by the story of Harishchandra, and from the play Harishchandra, students, Gandhiji learned the lesson of truthfulness. And students, another play, that is Sharvana Pitribhakti Natka. It also impressed him so much that he decided to serve his parents like Sharvana. Now students, let's read the next half of the chapter. So students, let's begin with the chapter first of all. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. Yes, students, who was Dorabji Jimmy? The headmaster. Okay, and students, why was he popular among the boys? Because students, he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. Now, beta, he had made gymnastics and cricket compulsory, and I disliked both. Who disliked both, students? Gymnastics and cricket? गांधी जी को बेटा जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट दोनों ही पसंद नहीं थे. I never took part in any exercise before they were made compulsory. एंड बेटा गांधी जी ने क्या बताया कि उन्होंने जो है किसी भी एक्सरसाइज में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था जब तक उनको कंपल्सरी नहीं कर दिया गया था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. बेटा उन्हें पहले क्या लगता था दैट कि जिम्नास्टिक्स और एजुकेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद द एजुकेशन. टुडे आई नो that physical training is as important as mental training. But students, afterwards, he realized that physical training is as important as mental training. And the reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. Yes, students, Gandhiji disliked games, or we can say gymnastics, because students, he wanted to serve his father. Okay, and as soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Now it happened that one Saturday I had to go home. I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. Yes, beta, Gandhiji considered gymnastics and physical exercise as useless, as he always thought that it had nothing to do with the studies. But afterwards, students, he realized that physical exercise was as important as mental exercise. I had no watch, and the clouds deceived me. When I reached the school, all the boys had already left. The next day, on being asked a reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. बेटा वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, because of rain we can say. और बेटा जब उनके हेडमास्टर ने उनसे रीजन पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी. He refused to believe me. But students, Mr. Dorabji Jimmy was not ready to believe him. I was convicted of lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? अब गांधी जी ने सोचा कि मैं अपनी innocence को कैसे prove करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था. There was no way, but अब कोई भी तरीका नहीं था. I learned that a man of truth must also be a man of care. और तब उन्होंने बेटा इस इंसिडेंट से क्या सीखा? That a man of truth must also be a man of care. And this was the first and last instance of my carelessness in school. और ये स्टूडेंट्स उनकी केयरलेसनेस का लास्ट और फर्स्ट इंसिडेंट था जो उन्होंने ऐसा किया.
Yes, students, Gandhiji considered gymnastics and sports, or we can say physical exercise, as useless. बेटा गांधी जी को क्या लगता था, वो क्या मानते थे कि फिजिकल एक्सरसाइज, ये गेम्स जो है, जिम्नास्टिक्स हैं, ये सारी यूजलेस है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, दे आर यूजलेस. एंड स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज थॉट दैट गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ स्टडीज़, और इनका स्टडीज़ के साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं. गेम्स का और जिम्नास्टिक्स का स्टडीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है. बट स्टूडेंट्स लेटर ऑन, बट स्टूडेंट्स कुछ टाइम के बाद ही रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस. जब उनके हेड मास्टर ने गेम्स को कंपलसरी कर दिया, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ही रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस. और बेटा हम लोगों को भी जो है स्टडीज़ में और गेम्स में दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरा पूरा दिन स्टडी करते रहें या पूरा पूरा दिन खेलते रहें. हमें दोनों चीज़ों में बेटा बैलेंस बना के रखना चाहिए. स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप स्टडी कर रहे हैं बेटा, जब आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ स्टडीज़ पर रखिए. कुछ भी और बातों के बारे में मत सोचिए. और जब आप खेल रहे हैं तो सारा का सारा ध्यान अपना उस गेम में रखिए. मीन्स दोनों में बैलेंस बना के रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा पूरा दिन सिर्फ खेलते ही रहो या पूरा पूरा दिन स्टडी करते रहो. बेटा हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना चाहिए. बेटे जब भी आप स्टडी करते हो, सपोज़ आपने 2 आवर्स 3 आवर्स बेटा स्टडी कर ली है, तो उसके बाद बेटा आपको थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए. और उस गैप में बेटा जिस भी चीज़ से आप रिलैक्स होते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को एंजॉय करना चाहिए. कोई भी गेम है जो भी आपको अच्छा लगता है बेटा, यू कैन डू दैट एक्टिविटी. ओके. और स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बाद जब भी आप कुछ स्टडी करते हो अगेन, तो आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हो. और बेटा अगर आपका माइंड रिफ़्रेश है तो आपको बहुत जल्दी ईजीली सब कुछ लर्न हो जाता है. और अगर आप खुद ही परेशान हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इजीली लर्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप इतनी देर तक लगातार पढ़ोगे तो थक जाते हैं ना. लाइक सेम मीन्स हमें दोनों चीज़ों में बेटा बैलेंस बना के रखना चाहिए. ठीक है, हमें स्टडीज़ को और गेम्स को दोनों की जो है इक्वली इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. हमें दोनों को इक्वली टाइम देना चाहिए. ओके. Then once students, Gandhiji had to go back to school for gymnastics. But students, as soon as he came out, then the rain had started. But जैसे ही वो अपने घर से बाहर आए तो बारिश स्टार्ट हो गई. And when he reached the school, और जब वो स्कूल पहुंचे, all the boys had already left. ठीक है, सभी बॉयज़ वहाँ से पहले ही जा चुके थे, क्योंकि टाइम उनका हो चुका था वहाँ से वापस जाने का. देन स्टूडेंट्स, ही टोल्ड द टीचर, मीन्स गांधी जी ने बेटा उनकी टीचर जो मिस्टर जिमी थे, दोराबजी जिमी, उन्हें बताया द रीज़न, कि क्या रीज़न था कि वो क्यों लेट हो गई. ओके. देन ही टोल्ड द टीचर द रीज़न फॉर हिज बीइंग लेट. बट स्टूडेंट्स, मिस्टर दोराबजी जिमी रिफ्यूज्ड टू बिलीव हिम. बट दोराबजी जी ने बेटा उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करा. उनको बोला कि नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो. एंड स्टूडेंट्स, ही पनिश्ड हिम फॉर टेलिंग अ लाई. और उनको बोला कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. स्टूडेंट्स, इस इंसिडेंट से गांधी जी ने क्या सीखा? दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी अ मैन ऑफ केयर. मीन्स हमें केयरफुल भी होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, try to learn from your experience. Okay, try to learn from your experience and be punctual and be truthful like Gandhiji. And students, always remember that a healthy mind resides in a healthy body. And this point, also remember that a man of truth must also be a man of care, means you should be careful also. Okay students. Now students, I hope that all of you have understood this part well. Now students, read next half of the chapter and try exercise of this chapter. That's all for today students. Thanks and have a nice day.